के कारण हम दिल्ली नहीं जा पाए। दिल्ली में था हमारा शॉपिंग का प्लान। अब बजट था तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। सो हम ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन लखनऊ चूज किए फॉर सम चिकन-कारी शॉपिंग। तो चलिए लखनऊ का नजारा लेते हैं और नवाबी खाना ट्राई करते हैं। Hello, welcome to another vlog. So I hope you are seeing all our vlogs and you are getting an idea about the places we are visiting and how we are doing it. So now we are driving from Agra to Lucknow. Oh, which was not too much in our plan, but we made it. So let's go to Lucknow and check out the place, and our plan is to eat a bit and do some shopping, and we'll go there and plan. So stay with us and let's drive. And as you can see, today is a no sun day again and it's quite cold. So let's enjoy the chill and let's see how cold is it at Lucknow. So let's go. तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका लॉन्ड्री आइटम्स बनते ही है. Wherever we go, we kind of find out which is a good laundry at that locality, and if you are staying for like 48 hours, usually they give it to you in that time. So हम इधर भी वैसे किए थे, and it was 115 rupees per kg. So that becomes much reasonable compared to what hotels charge you. ठीक है. तो ऐसे एक लॉन्ड्री में हम दिए थे. अभी हम कलेक्ट करके फिर हम लखनऊ के लिए जाएंगे. ये टम्बल ड्राई क्लीन के नाम से हमने एक फ्रेंचाइजी आउटलेट यहाँ खोला हुआ है, जो कि फतेहाबाद रोड स्थित पंचवटी प्लाजा में है, आगरा में. यहाँ पर हम लोग जो है ड्राई क्लीन की व्यवस्था है हमारे पास, लॉन्ड्री की व्यवस्था है, शू क्लीनिंग करते हैं, कारपेट क्लीनिंग करते हैं, और पर्स वगैरह सभी तरह की और टेडीज़ वगैरह सबकी क्लीनिंग होती है. ड्राई क्लीनिंग हमारे यहाँ 4 घंटे में देने की व्यवस्था है. कोई भी कस्टमर आए अर्जेंट बेसिस पे एक्स्ट्रा व्यवस्था है, जो कि 4 घंटे में हम इनको दे देते हैं. ये आ गया हमारा लॉन्ड्री हो गया, क्लीन क्लोथ्स नाउ. So now let's go towards Lucknow and enjoy the drive with us. So we have just taken the ramp from Agra on Agra Lucknow highway. We are still getting indicated that we have to take certain turns, then reach the highway. You can see there is a roundabout out there in front, where we will get onto the main highway. If we go straight, it takes you to Greater Noida and Delhi. And this roundabout, if you are taking, it will take us to Lucknow. आप देख सकते हो, it's 1:30 in the afternoon. It's still very foggy, and that is why we had to drop the plan for Delhi, because Delhi, if we had gone, we would have gone today morning. Today morning it was not visible at all. Agra Lucknow expressway. सही बताए, लखनऊ जाने का प्लान हमारा नेक्स्ट डे का था. रात में पहुंच के अगले दिन लखनऊ साइट सीइंग और फिर बनारस जाके नाइट स्टे. पर जब दिल्ली जाना नहीं हुआ तो हम सोचे क्यों ना एक दिन पहले लखनऊ पहुंच के लखनऊ में शॉपिंग का आनंद उठाया जाए. सो टुडे इवनिंग, इंस्टेड ऑफ शॉपिंग एट जनपथ मार्केट and roaming around Connaught Place, we will do some chikan-kari shopping at Hazratganj. So now we are on the highway to Lucknow. As you can see, it's completely wide 3-lane highway. In fact, there is a 4th service lane also. So everybody is following the lane manners. Nobody is driving on the 3rd lane, which is your overtaking lane. And it is clearly demarcated that if you are going under 80, you should take the 1st lane. Till speed limit 80 to 100. If you are going at that speed, then take the 2nd lane. And the 3rd lane is only for overtaking. And I have put it on cruise and I'm continuing at the same speed. I haven't had any requirement to slow down.
यहाँ पे भी देख सकते हो कि everybody is going at 80 at least, so we should be able to cross this section pretty soon. Since we had a late breakfast, we stopped at a food plaza much in the afternoon for a late lunch. तो अभी लखनऊ हाईवे पे हम लोग रुके हुए हैं एक फूड कोर्ट पे। कितना किलोमीटर आए हैं? अराउंड 100 किलोमीटर्स तो आ चुके हैं। अभी अनदर 260 ऑड किलोमीटर्स बाकी है। तो अभी क्विकली लंच करेंगे फूड कोर्ट पे एंड देन वी विल प्रोसीड। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट इन द फूड कोर्ट। चलिए। फूड कोर्ट में मल्टीपल खाने के ऑप्शंस हैं। यू कैन चूज फ्रॉम पिज्जा, नॉर्थ इंडियन स्नैक आइटम्स लाइक छोले भटूरे एंड कुलचा छोले, साउथ इंडियन डोसास एंड इडली एंड चाट फूड आइटम्स ऑल्सो। हम लिए मील काउंटर से 2 नॉर्थ इंडियन थालीस। खाना हो गया हम लोगों का। अभी हम लोग जाएंगे, बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पे। वी हैव टेकन थाली and we are done with it. Now we are going. How much is the thali for? 250 rupees. 250 rupees and quantity is lot. So, and here brown cupcake for Arav because he wants to eat cupcake. Barista bhi hai yahan pe, if you want to have coffee you can do that. So let's go and let's see. Traveling in UP has become extremely convenient. Fast highways, flexibility of traveling by your own car and these meal stops जो कि road trippers के लिए एकदम perfectly positioned at regular intervals. I have relatives in Chandigarh जो कहते हैं हाईवेज इतने अच्छे हैं कि वो चंडीगढ़ से वाराणसी एक दिन में आराम से कवर कर लेते हैं। So you can see this entire stretch. We took it from Agra till now and I think till Lucknow. The entire stretch is fenced, which is to ensure that there are no stray animals walking in or even people are deterred from crossing over. And the good part of that is that see, trucks are not on the third lane. They are either on the first lane or on the second lane. The third lane is only being used for overtaking. This is us crossing river Ganga. एक्सप्रेसवे इतना बढ़िया है कि अगर गूगल मैप्स ऑन नहीं रहता तो हम समझ ही नहीं पाते कि ये रिवर के ऊपर ब्रिज है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, there are 2 lanes on the other side और इधर 3 लेन है। तो पीछे बोर्ड लगा हुआ था दिस इज एन इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। इन एन इमरजेंसी अ फ्लाइट कैन लैंड हियर, राइट? यहाँ से यू सी दीज लाइन्स हियर, दिस इज द मार्किंग। अ फ्लाइट कैन लैंड हियर एंड द कार्स कैन गो फ्रॉम देयर। सो वी आर राइट नाउ on the stretch of highway which has been constructed for an aeroplane landing in emergency. जैसे रनवे पे मार्किंग्स रहते हैं वाइट वाले like a zebra crossing, the same thing is out here. As you can see, it is right now 5:30 and we are about to, rather 5:45 now, and we are about to reach Lucknow and it's already started becoming foggy. So you can see on the sides, lovely. And we are still on this flat 6-lane highways.
but I was amazed to see the lane discipline that was getting followed. There were always exceptions, but more or less people were using the center lane to travel. So another foggy evening for us in North India. तो पहुंच गए हम लखनऊ। यहाँ पे हम एग्जिट ले रहे हैं फ्रॉम द हाईवे टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन इन हुसैनगंज। Okay, so we are now inside Lucknow city और हमें जाना होगा हुसैनगंज करके एक जगह पे, ठीक है? So we are now stuck in office traffic. Although it is not that bad, it's only at signals that we are having to stop. But otherwise, it's moving traffic. We are almost there. Another 3.5 kilometers to our hotel. As we entered Lucknow, उससे पहले there was a toll plaza, and they Exit the charged us roundabout onto Kumar Jagdish Marg. 655 rupees. That was the entire In toll for the 800 stretch. meters, at the roundabout, continue straight onto Baron Road. So this is our hotel, Golden Tulip by Sarovar Portico. We are booked here for 2 nights. So here is our room, Golden Tulip at Lucknow. Again nice bed. और ये है हम लोगों का लगेज and I quite like this corner. The TV and here sofa. We don't have a view as such this side. चलिए, that's it. This is our room. Now we will freshen up a bit. और अभी हजरतगंज जाने का प्लान भी है for some shopping. Let's see. चलिए चलते हैं हजरतगंज. We are all in double layer winter wear क्योंकि लखनऊ में it's really cold. So we just came in and very cold breeze blowing here. So wearing double layer. Let's go outside and see how do we feel. चाट खाने का प्लान तो है. Let's see if we can eat today or maybe tomorrow for sure. So let's go. Riku, will you tell hi? Hi, tell hi. Hi. क्योंकि हजरतगंज जो मार्केट है वहाँ पे पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए वी आर गोइंग या ई रिक्शा एंड वहाँ पे जाके विल डू अ वॉक एंड आप लोगों को ब्लॉग बना के भी दिखाएंगे. तो चलिए एंजॉय. Hazratganj is the downtown and the main shopping hub of Lucknow. बाजार्स के अलावा यहाँ पे है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, theaters, cafes and many offices. This was founded in 1827 by the then Nawab Nasiruddin Haidar Shah. Back then इस जगह का नाम था the Ganj Bazaar और यहाँ पे सामान मिलता था imported from China, Japan and Belgium. After First War of Independence in 1857, Britishers took over Lucknow. They demolished many Mughal-style buildings and brought European structures, remodeling this place like London's Queen Street. हम गए यहाँ का मशहूर चेन ऑफ दुकान सेवा चिकन. 2275 ही पड़ेगी आपको डिस्काउंट के बाद.
और ये क्या है व्हाइट, ये जो है व्हाइट? हाँ ये पूरा ड्रेस मटेरियल होगा, कुर्ता मटेरियल हाँ, कुर्ता ड्रेस नहीं होता है ना, मतलब ड्रेस सिला सिलाया हाँ वो नहीं होगा। नहीं होता ना। ये होगा कुर्ता दुपट्टा एंड सलवार 3 पीस को। ये कॉटन के होंगे, ये शिफॉन के होंगे। ये सब मटेरियल है। ये सारे मटेरियल पूरे मिलेंगे आपको। 1050 से स्टार्टिंग होंगे आपको। ठीक, अनारकली अनारकली लो, ये वाली सबको दे दो भैया। जो मैंने आपको वो बताई थी 150 की। पूरे 1 घंटे से 100 के ऊपर कुर्ता चेकआउट करके अपना पूरा 7,000 का बजट खत्म करके एक्सट्रीमली हैप्पी विद द शॉपिंग, वी प्रोसीडेड टुवर्ड्स अ फेमस डिनर डेस्टिनेशन अंबिका रेस्टोरेंट लालबाग फॉर सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे, कुलचे एंड घी हलवा। और प्राइसेस आप देखिए जरा। The food was freshly prepared, hot and tasty. The restaurant is not a fancy one, but the food is extreme value for money and is a must try if you are at Lucknow. Lucknow is also famous for galauti kebab. So if you are a non-vegetarian, don't miss out on tunde kebab. Tomorrow, we are going to check out another Nawabi fine dining restaurant, and the day after in the morning we will show you another specialty. तो हो गया हमारा शॉपिंग और खाना बहुत ही चीप में हुआ। How much did we spend? I think 235 rupees for kulcha, bhatura, rice, dal makhni and halwa. Right, and for me, I am not a foodie at all, so the kind of the amount of food they serve is a lot for me. So from tomorrow I'm going to share. Okay, and that's it. I hope you have liked this vlog. So let's see, we will continue tomorrow again. Going around Lucknow a bit. So stay with us and enjoy the vlog.